Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I will be taking the topic Significance of Principles of Management. Let's see the first point, providing managers with useful insights into reality. Reality here means the real world situations. ये जो principles हैं management के, ये managers की नॉलेज, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं. दे हेल्प देम टू टेक राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम. ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि पास्ट में वो जो मिस्टेक्स कर चुके हैं उन मिस्टेक्स को वापस न दोहराएं. दैट मीन्स दे आर गिविंग देम द सॉल्यूशंस फॉर द रिकरिंग प्रॉब्लम्स व्हिच दे वर फेसिंग इन द पास्ट. Very good example I can give you regarding the principle given by Froel, authority and responsibility. ये principle आप जानते हैं, authority का मतलब the power to command and responsibility means duty. ये principle बोलता है कि जब किसी employee को कोई responsibility दी गई है तो उसकी equivalent authority उसको दी जाए, तभी वो अपनी responsibility को fulfill कर सकता है. If excess of authority would be given, it would be misused. And if less of authority is given, the task will not be accomplished. तो इस प्रिंसिपल के द्वारा मैनेजर्स की नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी कि जब भी किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय को दी जाए तो उसके इक्वलेंट ही उसको अथॉरिटी मिलनी चाहिए. नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. See, we have various types of resources in the organization, that is physical, financial, human resources. और ये सारे resources scarce हैं. And optimum utilization means that is using the resources in the best possible manner that will help to minimize the wastage and maximize the productivity. तो ये बोलता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करके हम रिसोर्सेज का वेस्टेज एंड स्पॉइलेज अवॉइड कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल्स जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है, which help us to move away from the trial and error approach. Very good examples we can give you. For example, following the principle of division of work, following the principle of unity of command, following the principle of unity of direction, following the principle of order in the organization will help in optimum utilization of resources. Order का principle हमने follow किया तो human resources को अपना time waste नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को ढूंढने में, लोगों को ढूंढने में. Definitely the efficiency of human resource would be saved and human resources would be optimally utilized. अगर मैंने unity of command follow किया तो जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करेंगे, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा बीइंग कंफ्यूज्ड व्हाट टास्क हैज टू बी परफॉर्म. सेम वे नेक्स्ट पॉइंट सेज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हेल्प करते हैं बिकॉज दे अनेबल द मैनेजर्स to behave in a practical manner. That means they do not put their personal prejudices and biases while taking decisions in the organization. जैसे कि very good example मैं आपको दे सकती हूँ, subordination of individual interest to general interest. Here the managers are behaving in a practical manner away from personal prejudices and biases. That is, they are giving more importance to the organizational interest than the personal interest. Third point, scientific decisions. Scientific decisions कौन से decisions होते हैं? See, the management principles enable the managers to take the decisions scientifically. Scientific decision means the decisions which are based on facts, which are realistic, which can be evaluated. That means such type of principles which are away from personal prejudices and biases. That means these principles are enable them to take the decisions which are not based on blind faith
but they are actually based on objective approach. बहुत बढ़िया टेलर का हम प्रिंसिपल बोलते हैं, साइंस नॉट रूल द थंब. ये प्रिंसिपल, it enables the manager to have scientific analysis of each element of job or each element of work being performed by the workers. Next principle, next point is meeting changing environment requirements. हम जानते हैं कि every organization works in a dynamic environment, an environment which keeps on changing. Managers, they need to adapt their organization to the changing environment. And we know that by following the principles of management, which are general guidelines, these principles are flexible. That means these principles can be modified as per the demand of situation. बहुत बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ. Stability of personnel. This principle says that adequate time should be given to the employees to adapt themselves to the environmental conditions of the organization so that employee turnover can be avoided. अब sufficient time employee को मिलना चाहिए अपनी ability को दिखाने के लिए, अपनी talent को दिखाने के लिए. It can be modified as per the demand of situation. Either it can be 3 months, 6 months, 1 year, depending upon the situation the organization is working in. Next is fulfilling social responsibility. ये point बोलता है business is a part of society. That means जो भी inputs businessman को मिल रहे हैं वो society से मिल रहे हैं. जो भी output and organizations produce कर रही है उसकी demand society से आ रही है. So business entrepreneur is bound to fulfill certain responsibilities towards the society. That means this increased awareness of the general public has made it mandatory for the managers to behave in a socially responsible manner towards the stakeholders associated with the organization. और इन principles को organization में follow करके managers जो है अपनी society की तरफ, कम्युनिटी की तरफ, हर स्टेक होल्डर की तरफ सोशली रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव कर पाए. बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ फ्योल का. बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स आर एबल टू maintain equality among the workers. That means they are not discriminating on the basis of caste, color, sex, religion. So according to this principle, everybody is equal in the eyes of law. तो ये क्या हो रहा है, अपने एम्प्लॉयज की तरफ हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं. एंड लास्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. ये जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, ये मैनेजर्स की नॉलेज इंक्रीज करते हैं. सो दे हैव बीन कंपल्सरी इंक्लूडेड in the training, education and research of managers. Very important curriculums of BBA courses and MBA courses. These principles have been inculcated in the BBA and various type of MBA courses which are enhancing the knowledge of managers. तो इन principles की जानकारी लेने के बाद अगर मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को बेटर तरीके से मैनेज कर सकता है. He can refine his management practices. He can make research to develop new techniques of management and manage an organization in a better manner compared to the managers who is not having the knowledge of these principles. So here we understood the importance, the significance of these principles if they are successfully adopted in various types of organizations. Thank you. If you have any queries, please comment.